Muslims are not completely satisfied. We all feel that it is completely an internal matter of the community. It is completely an religious matter of the community. It is completely a Islamic matter of the community. देखिए यहाँ लखनऊ में कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग पुरुम्मीद हैं. You tell me that which is the department in India in which there is no malpractices, and the same stand for various वक्फ बोर्ड. वक्फ की प्रॉपर्टीज में मजीद फर्दर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और जिसको कि कहना चाहिए कि जो औकाफ की या जो वक्फ की रूह है उसको आप ख़त्म कर दें, तो ये अफसोसनाक है. जिस भी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन है तो आप उस डिपार्टमेंट के क्या तमाम रूल रेगुलेशन, उसका पूरा लॉ रिवैम्प कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, या ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है यू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट लॉ to target all these masjids. This lead to the conclusion by the Muslim community that the government is now going to target the community through the new Waqf Amendment Act. हमारे कब्रिस्तानों में भी हमारा कंट्रोल ना रहकर ऐसा ना हो कि किसी दूसरे लोगों का कंट्रोल हो जाए. मस्जिद से या कब्रिस्तान से या किसी मुर्दे से क्या आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? We have organized protests, but the protests were not on roads. We have given khutbahs or speeches in our mosque. We have also participated in the Batti Gul protest. तो इसमें रूल क्या फ्रेम हो सकते हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे? घरों में कैमरा लगाएंगे, मस्जिदों में कैमरा लगाएंगे, या कोई रजिस्टर रखेंगे जिससे कि साबित हो कि जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करने जा रहा है उसने पांचों वक्त की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने ज़कात दी कि नहीं दी, उसने हज किया कि नहीं किया. Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. The recent and much awaited judgment of the Supreme Court on the Waqf law has left many issues unresolved. According to some, it has addressed the inconsequential clauses while leaving out the major ones. Therefore, it is difficult to say whether it is a victory or a defeat for the contenders. In other words, who won, if at all anyone did. The Waqf law that the Modi government brought in some months ago has further antagonized the Muslim community, which alleges that the BJP government is out to get them, so to speak. The government on its part has its own take. It alleges large-scale corruption, mismanagement and encroachment, all in the name of Waqf. The Waqf is controlling the third largest pool of properties after the railways and defence, the government has said. The Supreme Court has addressed issues, but the battle is far from over, or at least so it seems. What will happen next? Will the government have its way, or will the Muslim community win some, lose some, so to speak? Who best to answer this than the All India Muslim Personal Law Board, which represents and protects the interests of the Muslims in matters of personal law? We have with us Khalid Rasheed Firangi Mehli, a cleric and executive member of the board, to decode the Supreme Court's judgment on this complex issue and take us through what the community wants and has been denied. Khalid Rasheed Firangi Mehli here with us in HT's weekly talk show, The Interview. Welcome to the show, Khalid Rasheed Firangi Mehli, and thank you for being here with us. It's my pleasure to be part of this important discussion. Let me begin with your reaction to the Supreme Court judgment on Waqf. The Supreme Court stayed some provisions but refused to freeze the law. Do you see this as a victory or a setback? Or to put it differently,
who won and who lost? As far as this interim order of the Supreme Court is concerned, our view is that we have been able to get around, you can say, 10% of the relief, and we will wait for the final judgment. So isn't getting 10%, like you say, of the relief a kind of a setback? And defeat may be a strong word, but somewhere the Muslim community has been shortchanged? We expected and we have demanded that the whole of the act must be stayed, but the Supreme Court has not done so. So we will not use the word defeat as you mentioned, but we will wait for the final judgment. कितनी उम्मीद है आपको 10% से 90% या 80 या 70% पहुंचने की? देखिए, यहाँ लखनऊ में कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम लोग पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जब कभी भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो जो 90% उम्मीद है वो पूरी होगी. Do you feel that the Supreme Court order is a step in the right direction, or does it create a state of administrative limbo for Waqf properties? जैसे अब टल गया मामला और वक्फ प्रॉपर्टीज ना इधर की रही ना उधर की रही, जो ऑर्डर आया है. जहाँ तक जो इस ऑर्डर में जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वक्फ प्रॉपर्टीज का, तो उस सिलसिले में कई ऐसी बातें हैं जिनको कि रखा जा सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं और हम लोग समझते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में मज़ीद फर्दर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. और अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, उससे कोई इनकार नहीं है कि देयर वाज एंड देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑलवेज हर काम में, हर डिपार्टमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है. वही वक्फ बोर्ड में भी था, लेकिन ऑल टुगेदर आप पूरा रिवैम्प कर दें या पूरा चेंज कर दें और जिसको कि कहना चाहिए कि जो औकाफ की या जो वक्फ की रूह है उसको आप ख़त्म कर दें, तो ये अफसोसनाक है. What is your feedback? Are the Muslims satisfied with the verdict? Muslims are not completely satisfied with the verdict. As far as the Muslim community is concerned, we have always approached the highest court of this country with the ummeed that we will get relief. And we have been able to get relief in a number of cases. And the same we expect in this case also. And as far as the sentiments of the general public and the general Muslim community is concerned, we all feel that it is completely an internal matter of the community. It is completely an religious matter of the community. It is completely a Islamic matter of the community. And whenever you will go through the initial act which was made regarding the Waqf properties and the present act, you will find a vast difference between both the acts. You know, before we get to the nitty-gritty, let me ask you, what is the meaning of Waqf in Islam? According to Governor Arif Muhammad Khan, who is well read, he says there is no mention of Waqf in the Quran. The term Waqf is not mentioned in the Quran, is what he told me in one of his interviews with me. See, as far as Quran is concerned, Quran is the final word of Allah. It is basically a rule book, and how we have to follow all these rules, it has been mentioned by the tradition and the Shariat or the personal laws of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. So ये कहना कि फना चीज़ कुरान में मेंशन नहीं है, it is not 100% correct. As far as Waqf is concerned, Allah has very clearly mentioned in one of the verse of the Quran that whosoever, यानी जो भी अपनी प्रॉपर्टी को और ये चाहता है कि उसको अल्लाह से भलाई हासिल हो, तो उसको चाहिए कि वो सबसे महबूब चीज़, सबसे अपनी प्यारी और कीमती चीज़ वो अल्लाह की राह में वक्फ कर दे या अल्लाह की राह में डोनेट कर दे. फिर इसी आयत पर अमल करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अल्लाह की राह में वक्फ किया. उनको जो बागात मिले थे उनको आपने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया और आपने मुसलमानों को भी हुक्म दिया
कि तुम अल्लाह की राह में अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ करो. सो to say that it is not a part of Islam, in fact it is an integral part of our religion. बट ये जो लफ्ज है वक्फ, ये कुरान शरीफ में है या नहीं है? ये देखिए, लफ्ज वक्फ जो है, इस तरीके से लफ्ज नमाज भी कुरान मजीद में नहीं है. उसमें लफ्ज सलात आया है, सलाह आया है. इसी तरीके से बहुत से, जैसे नमाज जो है वो इस्लाम में सबसे अहम इबादत है. अब नमाज पढ़नी कैसी है, जैसे हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, उसमें कितनी रकातें पढ़नी हैं और कैसे पढ़नी है, उसकी डिटेल कुरान में नहीं है. अल्लाह ने कुरान में से ये फरमा दिया कि तुम्हारे ऊपर नमाज फ़र्ज है. एंड द सेम लॉ इज अप्लाइड एज फार एज द वक्फ इज कंसर्न्ड. सो मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि जो वक्फ लफ्ज है वो कुरान में है, या जो आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि वो मेंशन ही नहीं है उसका, क्या वो ठीक कह रहे हैं? मैंने वही बात आपसे अर्ज की, कैसे लफ्ज नमाज है तो नमाज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जबकि लफ्ज नमाज कुरान में मेंशन नहीं है, बल्कि लफ्ज सलाह मेंशन है. अब नमाज हो या रोज़ा हो या हज हो या ज़कात हो, ये सब हमें कैसे इस पर अगर इसको करना है, उसकी हमें मिसालें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं. एंड द सेम, अभी जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पेश की, 20-25 ऐसी कुरान के वर्सेस हैं जिनमें कि अल्लाह ने ये पूरे इंसानों को ये हुक्म दिया है कि अपनी बेहतर से बेहतर और अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी जो हैं वो अल्लाह की राह में दो, यानी कि अल्लाह की राह में वक्फ करो. Arif Mohammed Khan has also said there is $1 billion funds misuse, and I quote him, "Come to Patna and you will see malls and residential apartments on Waqf properties. In Bangalore, there is a 5-star hotel on Waqf property. Waqf boards are dens of malpractices," unquote. How would you respond to this? You tell me that which is the department in India in which there is no malpractices. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में बड़े पैमाने में कमियां पाई जाती हैं, बेईमानी होती है और करप्शन है. एंड द सेम स्टैंड फॉर वेरियस वक्फ बोर्ड. ये कहना कि फला प्रॉपर्टी पे 5-स्टार होटल बना या मॉल बना है, तो वक्फ का जो इंटेंशन होता है, जो मकसद है वो ये, और उसके जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब एक इंसान जो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जब वो इस नीयत से अल्लाह की राह में दे देता है कि उसका फ़ायदा अल्लाह के मखलूक को मिले, यानी इंसानों को मिले, और उसका सवाब उसको मिले, मरने के बाद भी मिलता रहे, तो इसी को वक्फ कहते हैं. अब जब इंसान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसके लिए एक वक्फ नामा बनाता है, और उस वक्फ नामे में ये मेंशन करता है कि जो मैंने ये प्रॉपर्टी डोनेट की है, ये किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए. तो अगर जिस प्रॉपर्टी पे 5-स्टार होटल बना है या मॉल बना है या मस्जिद बनी है या कब्रिस्तान बना है, अगर वो अकॉर्डिंग टू वक्फनामा है और उसकी जो इनकम है वो जिनके लिए वक्फनामे में मेंशन की है उनको उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये इंटेंशन और ये यूज़ सही है. और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका यूसेज अगर गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो प्रेजेंट वक्फ एक्ट 2013 है, जिसमें कि अमेंडमेंट किया गया 2013 में, वक्फ है 1995 वाले में, उसमें देयर आर मोर देन इनफ प्रोविजन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कमिटी और द मुतवल्ली हु इज रिस्पांसिबल फॉर द माल प्रैक्टिसेस. You know, you just said that which is an institution where there is no corruption. But you know, two wrongs don't make a right. So that justification somehow is misplaced. देखिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन है तो आप उस डिपार्टमेंट के क्या तमाम रूल रेगुलेशन, उसका पूरा लॉ रिवैम्प कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, या ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है यू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट लॉ. तो हम लोग का ये कहना था कि जो प्रेजेंट वक्फ एक्ट है 1995 का, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स किए गए 2013 में, उसमें मोर देन इनफ प्रोविजन है कि अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या गलत कहीं पर कब्जा है तो उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट्स मोर देन इनफ एक्शंस ले सकते हैं
तो इसी को आप मजबूती से इम्प्लीमेंट करिए rather than make a new act. I'll come to the allegations a little later, but against the backdrop of what you are saying, which is changing the act, what do you think is the intention of the government to change this act? What is the game plan as you and your community sees this? This answer can be given more comfortably and correctly by the people who are responsible for making this new act. Our contention is that when you are making a new law for a particular community, you have to and you must, and it is a rule in all the democracies, that you must take the advice of the concerned people, which have not been taken in this while making this act. After making this act, you have made the GPC, and even before the GPC, whatever objection we have raised, there you have not made any change in this Waqf Act. So what is the intention? This answer can be given correctly by the people sitting in the government. What is your thought on that, or what is your interpretation? And would you agree with a section of the community which feels that the BJP government is out to get them? Around 80% of the Waqf properties are in the form of masjids, qabristan, dargah, and imambadas. Out of 20% of the remaining Waqf property, there are a number of land on which the government departments' buildings have been constructed without the permission of the Waqf board. Our demand from day one that at least the government must give the compensation or the rent of that particular land or that particular building to the concerned वक्फ बोर्ड की परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे वक्फ जो है वो कोई एक अलग चीज़ मुस्लिम कम्युनिटी में है, जबकि आप सब जानती हैं कि जितनी भी रिलीजन है सब में ऑलरेडी एंडोमेंट ट्रस्ट कायम है, रिलीजियस ट्रस्ट कायम है, उनमें किसी में भी इंटरफियर नहीं किया जा रहा है अदर देन द एंडोमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है मुसलमानों के अंदर शक व शुबा बड़े पैमाने पर पाया जा रहा है. फिर जो कुछ भी मामला हुआ बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में या ट्रिपल तलाक के केस के सिलसिले में या जिस तरीके से आए दिन नई मस्जिदों का मसला उठाया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को देख करके मुसलमानों में बड़े पैमाने पर एक मायूसी पाई जा रही है कि अब हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे और हमारे कब्रिस्तानों में भी हमारा कंट्रोल ना रहकर ऐसा ना हो कि किसी दूसरे लोगों का कंट्रोल हो जाए. What about the suspicion or what about the allegation that the BJP is out to get at the Muslims? Time and again, issues relating to various masjids have been raised during the tenure of the present government. All these masjids of which issues have been raised were constructed 100 years ago. So to target all these masjids, this lead to the conclusion by the Muslim community that now we are, or the government is now going to target the community through the new Waqf Amendment Act. Now coming to some allegations which have been leveled in the court, and let me take them one by one. Lack of transparency and mismanagement of Waqf properties and rampant encroachment. The verdict referred to the Andhra Pradesh Waqf Board that had notified thousands of acres of government land as Waqf property. As far as this allegation is concerned, in the present Waqf Act, there are more than enough provision to take action against the encroachers. And then there are tribunals made for this purpose. And if he is unable to get relief from the tribunal, he can approach the High Court, and after High Court, he can approach the Supreme Court. So to make this allegation, I think that it is not proper. You know, Mr. Mehli, these are technicalities. But the fact remains, and which was also presented in the court, that there is rampant encroachment
and mismanagement of Waqf properties. So it's easy to say there is a law, but then sometimes the provisions have to be amended. As far as allegation is concerned, anyone can make allegation against anyone. Majority of the property are being used for worship purpose, and there are dargahs and Karbalas. You cannot say that there is corruption in any Qabristan or any masjid. Those properties which are being used for commercial purposes, yes, there can be and there is corruption in these cases. Why the action has not been taken, this must be clarified by the concerned Waqf boards. You know, corruption is one part, but what about mismanagement of Waqf properties and rampant encroachment? And as I gave the example of the Andhra Pradesh Waqf Board that had notified thousands of acres of government land as Waqf property. So let's talk about that. Yes, there are encroachments. So now answer must be asked or the reply must be taken from the concerned Waqf board what step they have taken to remove that encroachment. Till now, the Limitation Act was not applicable on the Waqf properties. Now, this act have made it clear that Limitation Act will be applicable on the Waqf properties also. अगर कोई किसी प्रॉपर्टी पे एक वक्फे तक उस पर कब्जा है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत ये मान लिया जाता है कि इसको इसका कानूनी इख्तियार हासिल है। वक्फ के सिलसिले में ये अभी तक नहीं था। अब आपने जब लिमिटेशन एक्ट वक्फ पर भी लागू कर दिया तो जिसने इंक्रोचमेंट कर लिया है तो अब उसका उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। तो जो इंक्रोचर्स हैं उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी? जो इंक्रोचमेंट ऑलरेडी अगर 50 साल से किसी वक्फ प्रॉपर्टी पे किए हुआ है तो यानी कि एक तरीके से वो वक्फ से निकल के उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि इस नए एक्ट में लिमिटेशन एक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे कर दिया गया है। इस वजह से ये बात कही जा रही है। What about the allegation that Waqf properties run into crores of rupees? The government has said, and I quote, the Waqf is controlling the third largest pool after defense and railways, unquote. What is your response? Rather, what is your defense? और आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गलत परसेप्शन नेशनल लेवल पे बनाया गया है कि जैसे मुसलमानों ने खुदा न खास्ता किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसको वक्फ कर दिया हो, जबकि ये जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि 100% एक रिलीजियस मैटर है और जो भी वक्फ करता है वो इस नीयत से करता है कि इसका सवाब उसको मिलेगा। अगर आपने बेईमानी करके कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ये बच्चा भी जानता है कि ये अन इस्लामिक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो बार बार परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिस भी मुसलमान ने हिंदुस्तान के जिस भी कोने पे अपनी उंगली रख दी और ये कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो जाती हो, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस है। उसका पूरा एक लीगल सिस्टम है। तीसरी बात ये कि जो ये कहा गया कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास इन द फॉर्म ऑफ वक्फ है, तो मेरा ये कहना है कि इसमें मोर देन 80% ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो इबादत गाहों की शक्ल में है, जिससे कि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, बल्कि उसके मेंटेनेंस पर कम्युनिटी का और ख़र्चा होता है। मस्जिद से या कब्रिस्तान से या किसी मुर्दे से आप या किसी दरगाह में जो भी बुजुर्ग दफन है उनसे क्या आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनके मेंटेनेंस पर आपका और एक्सपेंसेस लगते हैं, आपका और ख़र्चा होता है। प्लस ये कि इसी तरीके से अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो डेटा बैंक है अगर आप उसको भी पब्लिक के सामने रखें तो आप ये देखेंगे कि दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में मुसलमानों की जो अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। जो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ हम ये समझते हैं वो ये है कि उन्होंने मार्केट रेट के हिसाब से जोड़ के बता दिया कि इस वक्फ प्रॉपर्टी की इतनी मिल्कियत है।
अब उस मस्जिद को ना हम बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर वो कई लाख करोड़ की भी है तो उसका मेंशन करने से फ़ायदा क्या है? सेम स्टैंड फॉर ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान एंड दरगाह। तो ये कह देना कि इतने लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहिए कि उनमें से किन किन प्रॉपर्टीज से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये डेटा भी गवर्नमेंट पब्लिक के सामने आना चाहिए। You know, it is not about the revenue so much, but let me give you some figures. The armed forces have around 18 lakh acres of land. The railways have around 12 lakh acres, and the Waqf 9 lakhs. So it is about the land pool that we are talking about, where the Waqf is the third largest owner. So it's not about the Sachar committee talking about the market value. It is about the amount of land that the Waqf holds. I am saying the same thing, that the government must also put forward the figures of the endowment properties of other communities also. If you will compare the Waqf properties with the religious buildings of the religious structures of the majority community, you will reach the conclusion that naturally the majority community have much more property as compared to the Waqf properties. No, but the Waqf has 9 lakh acres. 9 lakh acres, as I have mentioned, that 80% of the properties of this 9 lakh acres are in the form of masjids, qabristan and dargah. So what is the use of putting forth this large figure? And by putting such a large figure, the general public can confuse, and they have reached the conclusion that Muslims have such a vast land in this country, and even then they are not being able to use it commercially in the interest of the community. But even if they can't use it commercially, the fact remains, and you would agree, that 9 lakh acres of land is with the Waqf. I'm saying that the government or the concerned department must also put forward the endowment properties or the religious property of the other communities also. If you will take into consideration any city, you will find that if there are 10 Waqf property or 10 masjid or 10 qabristan, you will find that there are 100 buildings or 100 temples of other community. You know, on another point of Waqf by user, the Supreme Court upheld the deletion of Waqf by user. In fact, it is pointed towards the menace of encroachment, quote unquote. What do you have to say on this point of Waqf by user? The Waqf by user is an integral part of the Waqf Act in our country. It is also an integral part of the Muslim personal law. The big question is that if our masjids have been established 500 years ago, how can one expect that the property or the land property or the registry property or the revenue record of such an old masjid can be produced? So if there is no legal paper which is considered to be a Waqf by user, I want also to mention that the Honorable Supreme Court in a number of judgment has make it very clear that once a Waqf is always a Waqf. So to say that from now on no new Waqf by user will be admitted or considered, that then what will happen to this law, that once a Waqf is always a Waqf, and once a Waqf is always a Waqf is also a part of Muslim personal law. So then how do you look at the Supreme Court upholding the deletion of Waqf by user? If Waqf by user is deleted, or if it is such that from that now Waqf by user will not be considered to be a legal form of Waqf, then around 90% of the Waqf property are in the form of Waqf by user. Then what will be the status of all those 90% of the property? And 90% of the properties, as I mentioned, are in the form of places of worship. Exactly. That is my question. That what will be the fate of that 90%? Then daily there will be a new controversy will be raised
which at present we are facing around 10 to 12 cases only, then each and every day a new case will be registered, which I think will not be in the interest of the community or in the interest of the country. At another level, the court's order is confusing on the issue of the collector. On the one hand, it has upheld the appointment of a designated officer above the rank of a collector to conduct an inquiry into whether Waqf land is government property or not, while saying that a revenue officer cannot decide the title of the property, and that falls within the ambit of the Waqf tribunal. How do you interpret this? We have welcomed this relief given by the Honorable Supreme Court, because in the present act, it has been mentioned that the district collector will decide whether a particular property is a Waqf property or a government property. And from the time if one has put forth an application against a Waqf property, it will be considered to be out of Waqf until and unless the collector gave his final judgment. So basically, this act have given judicial power to a district collector, which was against the basic principle of our constitution as far as the judiciary and administrative powers are concerned. So we have welcomed this step taken by the Supreme Court. And yes, this interim order from this point of view has given relief to us. What are the other points of the order that you have welcomed? And, or to put it differently, what are the good points of this judgment? First of all, the most important was this of the related to the district collector. And the second is that, as the Supreme Court has said, that to say that if a person want to make his property a Waqf property, he must be a 5-year practicing Muslim. The Supreme Court has said that this will not be implemented unless and until the government make rules and regulation regarding this. However, there is no such rule or no such law as far as other communities are concerned. So our legal expert has put forward that this point or this amendment is basically against Article 26 of our Constitution. And the third point is that the interim order has limited the number of non-Muslim members in the Central Waqf Council and the State Waqf Council. However, our demand was that there should be and there must not be any non-Muslim members in the Waqf board, because Waqf is completely a religious matter of the Muslim community. And you all know that as far as the endowment trust or the religious trust of other communities are concerned, there is already a law that no member must be of any other religion. Instead, the same law was drilled in the Waqf Act, which have been removed in the new act. And the biggest relief is that this is not a final judgment. On the 5-year embargo, some claim now that the state government are going to frame rules to decide who is a Muslim and who's eligible to create a Waqf. So is that where we are headed now? And don't you see that as discriminatory? ये बात जो इसमें इनिशियली जब कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में ये बात कही कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त पे रोक लगाई जाती, स्टे लगाया जाता है, तो हम लोगों को एक खुशी हुई थी, रिलीफ मिली थी. लेकिन उस जब जजमेंट पढ़ा गया तो उसमें जो आगे ये बात कही कि अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई रूल फ्रेम करे, तो इसमें रूल क्या फ्रेम हो सकते हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे? घरों में कैमरा लगाएंगे, मस्जिदों में कैमरा लगाएंगे, या कोई रजिस्टर रखेंगे जिससे कि साबित हो कि जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करने जा रहा है उसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसने ज़कात दी कि नहीं दी, उसने हज किया कि नहीं किया. तो ये जो बात है, जो हम लोगों को इसमें यही कहना था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि किसी भी दूसरे एंडोमेंट ट्रस्ट में या रिलीजियस ट्रस्ट में ये रूल है कि सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग ही उसमें कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है. और सेम रूल जो था वो अभी तक वक्फ एक्ट में था मुस्लिम वक्फ के सिलसिले में, तो उसमें 5 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान का वो लगाया गया है, बार लगाया गया. ये बेसिकली अपने मुल्क के
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को, हर सिटीजन को बेसिकली एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है, हम ये समझते हैं कि ये उसके खिलाफ है. You know, the Muslim Personal Law Board was divided on the issue of protests. And you were among that section which feels that there should have been no protests. In hindsight, do you think your decision was wrong? And also, there were more protests in Delhi and south of India rather than in Uttar Pradesh. In a democratic setup, it is the right of each and every individual to say his point of view. So some majority of the people were of the view that yes, large scale protest must be organized, and some of people were of the view that the protest must be curtailed, keeping in view of the present scenario, especially in northern India. So the Personal Law Board in its final decision has said that the people or the members of the board of all these states must decide that whether a certain form of protest should be organized in their states or not. In Uttar Pradesh also we have organized protests, but the protests were not on roads. We have given khutbahs or speeches in our mosques. We have tied black bands on the occasion which the Personal Law Board has appealed. We have also participated in the Batti Gul protest. The Personal Law Board has appealed that we all must organize special duas for the safety and security of the Waqf property. That was also organized throughout the country. आप प्रोटेस्ट के खिलाफ क्यों थे? नहीं, हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं थे. पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये इख्तियार सबको दिया हुआ है, जिनको जिम्मेदारी दी है कि उनके स्टेट में जिस तरीके की कंडीशन हो और हालात हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड करें कि किस किस्म का प्रोटेस्ट करना है. तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी वेरियस प्रोटेस्ट किए हैं, ये नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं किया है. Would you agree that the reason you did not want protests was because you had a tough chief minister like Yogi Adityanath who would have cracked the whip? दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से या उनके डर की वजह से आप लोगों ने यूपी में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट नहीं किए. हम लोग सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, उसके अलावा नहीं डरते. यूपी में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर आप सड़क पे निकालते हैं तो किसी भी प्रोटेस्ट के लिए ऑन रोड, तो उसको कंट्रोल करना प्रैक्टिकली बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है. इस वजह से अदर देन प्रोटेस्ट ऑन द रोड जितने दूसरे फॉर्म थे प्रोटेस्ट के, उसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया और उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पीसफुली किया, क्योंकि फ्रॉम डे वन पर्सनल लॉ बोर्ड हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट ईच एंड एवरी protest must be as per the law of the land and must be completely peaceful. You know, the court has been silent on the ASI clause, wherein the ASI protected monuments, including the major mosques like the Rampur one and many others, will go under the control of the ASI and out of Waqf. Therefore, there will be no namaz and there are other issues. So how do you see this panning out? The Supreme Court has not given a stay on the ASI protected monument, whereas in the present or the new act, it has been mentioned that the Waqf under the ASI protected monument will not be considered to be Waqf. You all know that there are a majority of the ASI protected monuments, historical monuments, in which there are already masjid and mosques. And in number of masjid, namaz is also being offered. In some masjids, 5-time namaz is being allowed. In some masjids, only Friday namaz is being allowed. And in many of the masjids, you cannot offer a single day or a single namaz inside the mosque. So this is the present scenario, and what our contention is and was that masjid is basically built for offering prayers, for offering namaz. And as per the constitution of a country, no one has the right to stop you from offering namaz inside a masjid or offering puja in a mandir.
So why this is being done with the Muslim community? There is a very beautiful masjid inside Taj Mahal also, and at Red Fort, and many of the SI protected monument. So to say that from now on, these places of worship will not be considered to be a Waqf property, then what will be the status of these masjid? This is the big question which we are continuously raising. Exactly, and the court is silent on those. Yes, as I said, that court has not put a stay on this clause, which we were expecting, because this is one of the most important objection which we have raised. So how do you see this panning out? If our lawyers get a chance, then they will inshallah put their point of view before the court, and we expect that at least it must be said that yes, these properties are Waqf property. We have also said in the past that whatever the rules and regulation of the ASI in this regard will be, we are already, and we will follow if we are given the right to worship there. Apart from this point, which are the other points which have been left out in the judgment? Because there are important issues which the judgment has not touched. This is only an interim order, and we are waiting for the final order. And we have our legal team has raised objection against all the amendment made. Let us see what will be the final judgment of the Supreme Court. Finally, what is the way forward? अब आगे क्या? ये जैसे मैंने कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है. Already Personal Law Board has announced the second phase of protest, and the community is ready to take part in all these protests, and we will finally wait for the final judgment of the Supreme Court. और अगर उस फाइनल जजमेंट में 10% से 30% तक गए और 90 तक नहीं गए, तो फिर क्या मुस्लिम कम्युनिटी का रवैया होगा? नहीं, फिर तो क्या होगा, क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप सब जानती हैं कि बेसिकली ये हम लोगों की इबादत गाहों का मसला है, एक दो मस्जिद का मसला नहीं है. इससे पहले एक दो मस्जिद का मसला था तो उस पर सब्र कर लिया गया, लेकिन ये हज़ारों मस्जिदों, हज़ारों कब्रिस्तानों और हज़ारों दरगाहों का मसला है. तो लिहाजा इसमें आगे क्या स्टेप लिया जाएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसीजन आने के बाद ही उसी के लाइट में तय करेगी. There are hundreds and thousands of masjids and graveyards. So the Personal Law Board will take it final decision on this issue. And will not take it lying down? Yes, this time we will not take it lying down, because as I have mentioned that this is a very big issue, and it is not only limited to any particular area or to any particular place of worship, but all the places of worship of the Muslim community. This time we will not take it lying down. Khalid Rasheed, Firangi Mehli, thank you very much. Thank you for your time, and thank you for taking us through the Muslim Personal Law Board's reactions on the Supreme Court judgment. Thanks a lot. Thanks.